Hello children, this is the fourth session of pair of linear equation in two variables. Hope you have gone through the questions related to the previous topics. Now in this topic, I am going to deal with you all the questions related to time, speed and distance. Now children, you might have seen or you might have traveled through boat. So what happens? Boat you can see in the river or a stream. नदी में या स्ट्रीम में देखेंगे तो अब या तो बहाव की दिशा सेम होगी और या तो अलग होगी। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपके बहाव की दिशा सेम होती है तो आपका क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द बोट को हम कुछ एक्स मान लेते हैं और स्पीड ऑफ द बोट एक्स मान लेते हैं और स्पीड ऑफ द रिवर वाई मान लेते हैं। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम इसे बोलते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ऐसे समय हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द रिवर। अब क्या होता है, एक और कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जब स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द रिवर उल्टी, बहाव की दिशा उल्टी हो। जब बहाव की दिशा उल्टी होगी तो हमें बहुत प्रेशर लगाकर जाना पड़ेगा। ऐसे समय पर हमारा क्या हो जाता है, अगर ये एक्स और वाई है तो एक्स माइनस वाई होगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इस टाइप के क्वेश्चंस में देखना है। सबसे पहली चीज तो हमें ये याद रखना है कि जो सेम स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द रिवर अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाता है और स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द रिवर अलग अलग डायरेक्शन में है तो वो अपस्ट्रीम है। अब दूसरी चीज, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या ध्यान रखना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज always, no matter whatever is the question, always assume speed of boat as x। कुछ भी क्वेश्चन कैसा भी हो, उसमें एक चीज पूछी गई हो, but always assume speed of boat as x and speed of river as y। This is the first thing you should keep in mind. And then the second thing is, when you are talking about speed downstream, then speed will be x plus y, and when you are talking speed upstream, then the speed will be x minus y. This is all what you have to very well remember. Now let us come to the question and see what is the problem we'll face in this type of question. Now this question is, a motorboat can travel 30 kilometers upstream and 28 kilometers downstream. Just now I have told you in 7 hours. So the time is given to you and here the distance of upstream is given to you and distance of downstream is given to you. Earlier, just now I have told you that what you have to assume is that let the speed of the boat is equal to x kilometer per hour and speed of the stream is equal to y kilometer per hour. This is the first step. As soon as you see the question, you have to write in this way, first thing. And then the second thing what you have to write down, that speed of the boat while going downstream, what you have earlier noted down. Speed of the boat while going downstream. As earlier I have told you, downstream मतलब same direction, तो add हो जाएगा एक, तो what it will be, x plus y kilometer per hour. Now when you are talking about speed of the boat while going upstream, whenever any question is given to you, you have to write these four things while going upstream. Is equals to x minus y kilometer per hour.
This is a very important thing which you should know. Now come to the question. The question is 30 kilometer upstream. So you all know that distance is equal to speed into time. So what is this? This is speed and time is 7 hours. So if you talk about, you can write in this way also, d upon s is equals to t. So t is given to you. Um, First the boat is going 30 kilometers upstream and then it is returning 20 and 28 kilometers downstream. Both the time taken for covering both upstream and downstream is 7 hours. So first, how will you write? You will write in this way: 30 upon x my upstream is given to you. So 30 kilometers upstream is 30 upon x minus y. And then what is given to you? 28 kilometers downstream. Let us come to the question only. 30 kilometers upstream plus 28 kilometers downstream is given to you in 7 hours. In 7 hours, so time taken is, here this is distance, distance upon speed, again distance upon speed is equal to time. This is the first line what you have to write. And then just go through this line. It is written, it can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. Means एक बार जाना और एक बार आना. तो एक बार जाने में भी 21 किलोमीटर्स लगेगा और आने में भी 21 किलोमीटर्स लगेगा. सो द डिस्टेंस, आप अपने स्कूल जाते हैं तो जो डिस्टेंस होगा, लौटने में डिस्टेंस चेंज तो नहीं हो जाएगा. सो द डिस्टेंस विल रिमेन सेम. So in the next equation what it will happen, 21 is for the upstream also and 21 is for the downstream also. So you will just simply write over here 21 and how much time it has taken? 5 hours. This is the equation you have made. First step you have solved. Now whatever you have learned how to solve the equation will be followed over here. So first thing, what do you see? We have to, this is not a linear equation. First of all, you have to reduce it into the form of a linear equation. So what will you will do? X minus y is written in both the equations. So what will you assume? Let 1 upon x minus y is equal to a and 1 upon x plus y is equal to b. So according to this, what happens? Here it will become 30a plus 28b is equal to 7. I have earlier also told you that cultivate the habit of writing the equation in the form of ax plus by plus c equal to 0. So what this equation will become? 30a plus 28b minus 7 equal to 0. This is your first equation. Okay. Now what is your second equation? Second equation will be 21a plus 21b is equal to 5. This implies 21a plus 21b minus 5 is equal to 0. You will think that what does it matter if both are minus 7, then it will just simply cut. But if you form this habit, it will help you in further questions. Sometimes there are questions where, suppose you are doing with the cross multiplication method, that can help and that can change the complete solution. So you should first of all cultivate the habit of doing this. Now these two equations, you can see neither of them are the multiple of each other. So you are having the three methods. One is substitution method, second is elimination method, and the third is cross multiplication method. So let us solve this question by cross multiplication method. So what I have told you in cross multiplication method, you have to follow B cap. So this is
Our and now we shall proceed to the B cap. So what we will write? B over here. 28, 21. This is our B. And then C minus 7 minus 5. Then A 30, 21. And then again B 28, 21. B cap we have written. Now simply what we will do, we will put the sign of cross multiplication. And we have assumed instead of x and y, we have assumed it x minus y as a and x plus y as b. So we will write over here a upon 28 into minus 5. What it will become? 5 8 the 40, 5 2 the 10. It will become, and the minus sign is there. So minus 147. Again we will put the sign of minus, and this will become minus 150. Now equal to 1 upon 30 into 21 is 630, and then minus 588. Now what it will become? We'll just simply solve and see. A upon minus 140 plus 148 is equal to B upon minus 147 plus 150 is equal to 1 upon 630 minus 588. So what it will become? It will minus 147. So it will become A upon 147 minus 140, it is 7 simply, is equal to 150 minus 147, it is simply 3. And then this is 630 minus 588. 10 minus 8 is 2. 12 minus 8 is 4. So we have solved it in this way. Now solving again, what we will get? A upon B A upon 7 is equal to 1 upon 42. We should learn to, whenever the question is in the form of equal to, so we can just deduct denominators and numerator. Why? The reason is कि ये जो 7 है, अगर ये इधर जाता तो ये न्यूमरेटर में हो जाता है ना. We can write in this way also. A is equal to 7 upon 42. What is 7 upon 42? Is 1 upon 6. Now we have assumed, in the similar way we will calculate the value of B also. B upon 3 is equal to 1 upon 42. So we will now 3 ones are 3, 3 fours are 12. So what is the value of B? Value of B is 1 upon 14. Value of B. We have got both the values. Now we have assumed the value of x and y. So what is 1 upon x minus y is equal to 1 upon 6. So what is the value of x minus y? X minus y is equal to 6. In the similar way, we have got over here 1 upon x plus y is equal to 1 upon 14. So what do we get? X plus y is equal to 14. So these are the two values which we have got, and we will consider this as equation 1 and this as equation 2. Now we will solve both the equations. What do we get? Let us see. X minus y equal to 6 and x plus y equal to 14. On solving both the equations,
2x is equal to 20. X is equal to 10. So what is this x? I have told you that you have to remember that the x is the speed of the boat. So what is this? We will write that speed of the boat in still water is, I am writing it over here because I am not having the space for this. Speed of the boat in still water is equal to 10 kilometer per hour. Now we have to find out the value of y also. Putting in any of the equation, we will find out the value of y. X 10 minus y is equal to 6. So what do we get? 10 minus 6 is equal to 4. So we have got the value of y also. So speed of the boat in still water is 10 kilometer per hour and speed of the stream is speed of the stream is equal to 4 kilometer per hour. So this is all you have to do the question in this way only. Do as many questions as you can to perfect yourself in this type of questions. I'm going to do one more question is there related to this only. I hope you will better understand how to do it. If a person rowing at the rate of 5 kilometers in still water, here boat is not there. बोट जा रही है या आदमी जा रहा है, बात एक ही है. तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि हम स्पीड ऑफ द बोट को x मानते थे. तो जब हम स्पीड ऑफ द बोट को x मान रहे हैं तो वही स्पीड ऑफ द पर्सन हो जाएगी. यहाँ पर दे रहा है इफ ए पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. तो यहाँ पर स्पीड ऑफ द पर्सन क्या हो जाएगी इन स्टिल वाटर इज 5. इट इज गिवन टू यू एंड takes twice as much time in going 40 kilometers upstream as in going 40 kilometers downstream. Then the speed of the stream is. So what you have to do is simply you will write over here that let the speed of the stream is equal to, you will not say it as x because that may differ your calculation sometimes, because you always keep on remembering that upstream is x minus y and downstream is x plus y, and here if you will assume that the speed of the stream is x, you may commit a mistake. So let the always you suppose that the speed of the stream is equal to y kilometer per hour. Now we will see what the question is telling. Question is telling that speed of the speed upstream. What we will write? Speed upstream. We know speed upstream क्या होती है? X minus y होती है. तो यहाँ x क्या है? Speed of the man क्या है? Speed of the person दिया है आपको 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ. तो स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम x माइनस वाई होता है. x आपका 5 है, ठीक है. तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 किलोमीटर पर आवर. और इसी तरीके से स्पीड डाउनस्ट्रीम की बात कर लेते हैं. वो x प्लस वाई होती है. तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ये इतनी बात अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर
कि हम लिख लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन कह रहा है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या हो गया, 40 किलोमीटर क्या है, डाउनस्ट्रीम, इस डाउनस्ट्रीम का टाइम टी डी से डिनोट कर लेते हैं, और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम को हम 40 अपॉन 5 माइनस वाई इज इक्वल टू टी यू से डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, वी गेट व्हाट इज दिस, 40 अपॉन 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 5 is equal to 340 upon 3 TD 5 plus y. So one thing is there, when there is a sign of equal to, so simply you can just cut this 40 and 40. That will make your solution bit easier. Now what is over here, and 1 is there. So just do the cross multiplication. Bring this 5 plus y over here. 5 plus y is equal to 3, 5 minus y. So what it will become? 5 plus y is equal to 15 minus 3y. So it is 4y equal to 10, implies y is equal to 10 by 4 is equal to 2.5 kilometers per hour. So what is it asking? What is this y? Y is speed of the stream. Speed of the stream is 2.5 kilometers per hour. So this is what you have got your answer. For the standard solution, just pause your video and just you can note down, because you have to write in this way only, otherwise you are going to deduct some of the other marks. So now I hope you could have gone through this type of questions. Practice as many questions as you can related to this sports and stream. You can as much as questions you will practice, these questions will be you will feel much easier. Now let us come to the land. अब नदी की बात हो गई, अब जमीन की बात आ जाए। जमीन पे कार चल रही है। अब यहाँ पर places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If car travels in same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are speeds of the two cars? This is the question. Here this is car A and this is car B. And the distance is 100 kilometers apart. Now one car is starting from A and the other is, and when they are in the same direction, what will happen? Same direction means एक ही direction में आ रहे हैं, तो एक बार at different speed. If car travels in the same direction at different speed, and if the car travels towards each other, यहाँ पर they are traveling towards each other, and here एक दूसरे की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, तो they are traveling towards each other. So how much time they are taking? 1 hour. They are taking 1 hour. And when they are going at the same place, here there are two options given. If their car is traveling in the same direction, they are traveling in the same direction, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यही यहाँ कहीं जाकर ये जो है ये इनकी स्पीड कुछ और है, अपने डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं, तो ये टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स का लग रहा है। तो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड कि एक कार ए है, एक कार बी है, जब ये आपस में एक डिफरेंट डायरेक्शन में, एक इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है, जब ये ऐसे आ रहे हैं तो इनको कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर लग रहा है। जब ये दोनों
सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन को पहुंच रहे हैं किसी पॉइंट सी पर, तो ये जो है यहाँ पर इनको जो है 5 आवर्स लग रहे हैं. दिस इज ऑल फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड नो. तो नाउ वील जस्ट वर्क ऑन द सॉल्यूशन. हम सबको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है. अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये कार, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अब ये जब कहाँ जा रहे हैं कि दे कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो ये जो है यहाँ से आपका सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ से चले, कुछ स्पीड से चले, और बी वाला ये यहाँ पर तो जाकर नहीं मिलेगा, कुछ यहाँ पर. अब बी वाला कहाँ से चला, इस पॉइंट से चला, यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंचा. तो यहाँ पर जो हमारा डेस्टिनेशन था ये सी पॉइंट का, ये हमारा 100 था. तो ये ए और बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 100, और पहुंचे कहाँ, ये पहुंचा, ये इतना डिस्टेंस कवर करते हुए यहाँ पर पहुंचा सी पॉइंट पे, और बी वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करते सी पे पहुंचा. तो हमारे क्वेश्चन से साफ दिख रहा है कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, अगर हम ये बोलते हैं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक मिनट, अगर हम ये बोलते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, फर्स्ट कार में यहाँ से एक बार फिर से बता रहे हैं कि यहाँ से ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये लोग जा रहे हैं यहाँ कहीं इस पॉइंट पे मिल रहे हैं. अब यहाँ पर इसका गिवन है डिस्टेंस 100 किलोमीटर. इसकी कार यहाँ से चली और यहाँ आ गई, यहाँ आके मिली आके सी पॉइंट पे, और इसकी कार कहाँ से चली, यहाँ से चली और सी पॉइंट पे मिल गई आके. तो जो डिस्टेंस है यहाँ पर कह रहा है कि दे ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड एंड मीट इन 5 आवर्स. आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, तो यहाँ पर स्पीड हमारी नहीं पता. हम लोग लिख लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द कार बी, जो कार, एक कार की स्पीड जो है x किलोमीटर है, और हमारी जो है दूसरी कार की स्पीड है फर्स्ट कार की स्पीड, और सेकेंड कार की स्पीड है हमारी y किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंट स्पीड, तो हमने एक को मान लिया x किलोमीटर पर आवर और दूसरी को y किलोमीटर पर आवर, लेकिन मिल रहे हैं वो कितने, 5 आवर्स पे. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड हमारी पहले वाले की x हो गई और टाइम हो गया 5 इंटू एक्स. ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा ये डिस्टेंस, और इसका कितना हो गया 5 इंटू वाई, क्योंकि 5 आवर्स में मिल रहा है. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. अब इस क्वेश्चन से अगर हम देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, तो ये क्या हो जाता है, ये पूरा 5x किसके बराबर है, 100 प्लस 5y के. कुछ रिलेटिव स्पीड वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं. इफ यू हैव द प्रॉपर इमेजिनेशन regarding, so you can very well easily calculate the things. So what it has become, 5x minus 5y is equal to 100. So you will take 5 as common, so it will become x minus y is equal to 520 is 100. So this is our first equation. Now we will talk about the second aspect. Second aspect में है
कि एक कार है, वही सेम कार ए और बी का डिस्टेंस इन्होंने, अब यहाँ पर फिर से देखते हैं क्या लिखा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अब ए और बी फिर से चलते हैं, ए और बी चलते हैं और यहाँ पर अब यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि दे टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये ए पॉइंट है, ये यहाँ से चला, यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, और ये यहाँ से चला। तो जब ये यहाँ से चला तो ये कहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा। मान लेते हैं ये पॉइंट मीटिंग पॉइंट है, ये गिवन है बी, ये मीटिंग पॉइंट हमारा क्या है, डी है। तो अब लेकिन ये ए बी का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो ए बी का डिस्टेंस, ये हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे हैं, तो ए बी का डिस्टेंस तो हमारा 100 दिया हुआ है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर ये 100 है और इन्होंने क्या कहा है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, so our time is 1. So what is the distance over here? 1x for A and 1y for B. So what we will write here, distance traveled by second car. और we can say ये फर्स्ट कार सेकंड कार की जगह पे फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, फर्स्ट केस and second case. First, this is our second case. Second case, x plus y will become 100. So these are the two cases where we have to deal it. One we have got x minus y equal to 20, and the other we have got x plus y is equal to 100. When we will solve, and we can get very easily the values. I hope you have understood this type of question. Now we can just go through the standard solution. It is mentioned over here. Same thing, whatever has been told to you, it is written. You can pause your video and just go through this so that you may get the standard solution. In this way we have got two equations. This is our first equation. This is our second equation. And then solving these two equations, in any way you can either use the elimination method. Any method you can simply use x minus y is equal to 20 and x plus y is equal to 100. Simply you can just cut and you can get 2x is equal to 120 and x is equal to 60. And in the same way, putting the values x minus y is equal to 20, putting the values 20 here, 60 minus y is equal to 20, 60 minus 20 is equal to y, 40 is equal to y, and you get the speed of both the cars and are 60 km per hour. So here the two cases were discussed with you, and I hope you have understood very well. And please do the related questions, as many questions as you can, for the better understanding. No other option is there. If you want to get success in any type of question, you have to do lot of questions related to it. Now, let us have another question. Ruhi travels 300 kilometers to her home, partly by train and partly by bus. मतलब उसको, अभी ये लॉकडाउन का पीरियड है, अब इसमें मान लीजिए आपको कहीं से आना है तो आपको कुछ देर के लिए आपने ट्रेन से आए और उसके बाद आप बस से आ गए. तो एनी टाइम, any distance, suppose you are living in village or somewhere else where the train does not go, what you have to do? You have to travel that particular distance, some distance by train and some distance by bus. And the same case is with Ruhi also. She has to travel total of 300 kilometers. Now, she takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train. अब अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर ली तो अभी बस से ट्रेवल करने का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 300 माइनस 60. तो 300 माइनस 60 वाला जो डिस्टेंस होगा वो बस से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा. तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1 बनेगी, वो बनेगी फर्स्ट केस
कि हमें ये पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये चीज हमें भूलना नहीं है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड है, यहाँ पर हमारे आवर्स की बात हो रही है, तो हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, व्हाट इज अवर डिस्टेंस बाय ट्रेन। ट्रेन, तो हम फर्स्ट चीज हम मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, here distance is given to you, and you have to write about your speed. Let the speed, ट्रेन की स्पीड अलग होगी और बस की स्पीड अलग होगी। ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारा फर्स्ट केस क्या बना, फर्स्ट केस बना 60 किलोमीटर अपॉन ट्रेन से गई। अब 60 में से 30 माइनस 60 कर दिया तो ये क्या बच गया, 240। 240 डिस्टेंस उसने किससे कवर किया, बस से कवर किया। तो ये कितनी देर में कवर किया, 4 आवर्स में कवर किया। पहली इक्वेशन बन गई हमारी। अब दूसरी इक्वेशन की बारी आती है। दूसरी इक्वेशन कह रहा है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग, तो टोटल डिस्टेंस तो उसका 300 ही है ना। तो अब 300 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो अब हमारा सेकेंड केस बन जाएगा। सेकेंड केस में हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू, नाउ शी हैज टेकन 10 मिनट्स लॉन्गर। अभी 4 आवर्स तो लगे ही and 10 minutes longer. Now here is hours and here is minute. So first of all what we have to do is we have to convert minute into hour. So it will become hours. So 10 upon 60. So it has become 4 plus 1 by 6. So 4 6 is 24. It is 25 by 6. Here and now you have to learn some tricks of calculation also. You know 25 4s are 100 and 25 8s are 200. So you can little bit easily solve this question in this way. 25 we will take common. So 25 4s are and 25 8s are. So it will become 4 upon x and 8 upon y is equal to, here also 25 ones are 1 upon 6. This you have got. So the question is little bit easier. Now you have to focus what is written over here. Here the question is 60 upon x, means 1 upon x is there on both the things. So what you will do is you will simply write 60a plus 240b is equal to 4, and here 4a plus 8b is equal to 1 upon 6. Now do one thing. First of all, you will write let 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b. This is one thing you have to do. Now here we can see that 8 3s are 24. Elimination method is the easiest method which we can adopt. Here we can see if we multiply this equation with 30, then what do we get? 240, and then our question will be little bit easier to solve. So we will now solve the question. This is our first equation and this is our second equation. So these equations have become 60a plus 240b is equal to 4. And here this when we will multiply with 30, 3 4s are 12. So it will become 120a. This is 60a. 120a and 8 is a 24 plus 240b is equal to
1 by 6 into 30, what it will become? 6 5 is 30. So it will become 5. Hope you have got this. Now simply we will write on solving the equations. Solving the equation means you have to simply minus, subtract. Because subtracting will eliminate one variable, then we can get the value of the other variable. So subtract it. Now what it has become? 120 minus 120 minus 60, the sign is बड़ा वाले के नीचे माइनस का साइन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? -60a आ गया। और यहाँ पर -5 + 4 है, तो ये क्या आ गया? -1 आ गया। दोनों साइड में माइनस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और इम्प्लाइज a = 1/60। ये हमारा आ गया। a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू हम किसी में भी रख देते हैं, इसी में रख देते हैं मान लीजिए। तो 4 × 1/60 is plus 8b is equal to 1/6. So what it will become? 4 12 4 15 15 4 60. So 1/50, 15 plus 8b is equal to 1/6, and we will just simply get the answer. 8b is equal to 1/6 minus 1/15, and then we will just solve and we will get the what answer do we get? We'll get, after solving, 15 6 is 90 or 15 2 is 30. 8b is equal to 30, 6 5 is 30, 15 2 is 30. b is equal to, so we are going to get our value of b. Somewhere I have done wrong. So we can get the standard solution over here. In the we'll just calculate and we'll get the value over here. We'll get we have got the value of x1/x is 60, and then x की वैल्यू 60 आ गई, y की वैल्यू 80 आ गई। फर्दर सॉल्व करने पर x प्लस वाई की, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी आ गई 60 और y की वैल्यू हमारी आ गई 80। So speed of the bus is 60 kilometers per hour and speed of the train is 80 kilometers per hour. So this is all the, you can pause your video and get the solution. Now, so children, similar type of question I am giving you one again. Ankita travels 14 kilometers to her home partly by rickshaw and partly by bus. She takes half an hour if she travels 2 kilometers by rickshaw and the remaining distance by bus. On the other hand, if she travels, now here again you have to see that distance is 14 kilometers. So what you will do? She takes 2 kilometers by rickshaw. So let the speed is equal to, speed of rickshaw is equal to x kilometer per hour and speed of bus is equal to y kilometer per hour. Now this you have got. What you have to do is just simply, you know, distance is distance upon speed is equal to time. So the same thing what we will write over here according to the question. 2/x plus 12/y is equal to 1/2. And the second case is half an hour, it is written over here, so I have written half an hour. Now in the second case it is written 4 kilometers. 4 kilometer by rickshaw and 4/x. Then the remaining distance 14 minus 4 is 10. 10/y. And then the time what it has taken is 9 minutes longer. So it becomes 1/2 plus 9/60. So what it is? 32 the 60
So it becomes 30 plus 9 is equal to 39 upon 60. So this again we will just assume that let 1 upon, this is not linear equation, so what we will assume, let 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b, and we will simply substitute it. 2a plus 12b is equal to 1 by 2, and here 4a plus 10b is equal to 39 upon. So at first sight only we can see, if we multiply this first equation into 2, we can get very easily, we can solve it. So what it will become? 4a plus 24b is equal to, what it will become? 1. 1 by 2, and this will become 4a plus 10b is equal to 39 upon 6. So simply we will just subtract it. 24 minus 10 is 14b is equal to 1 minus 39 upon 60. So what do you get? 60 minus 39 is 21. So you get 21 upon 60. Now 3 7s are 21, 3 20s are 60, and 7 2s are 14. So you have got your value of b is 1 upon 2 into 20 is equal to 1 upon 40. So what is b? Distance b is equal to 1 upon x, 1 upon y. So 1 upon y is equal to 1 upon 40. So y is equal to 40. And what did you get about x? Similarly, we can find out the value of x. Finding out 2a plus 12 into. Similarly, we'll just put the value of b in this equation or this equation, any of the equation, and we can get the value of a. So this was our method of solving. For the standard solution, you can pause your video and just see how we have to write it. Now one more type of question I am going to discuss with you. This is also related with the speed, time and distance only. Now here the question is, a train covered a certain distance at uniform speed. If the train would have been 10 kilometers per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train was slower by 10 kilometers per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. Now what you have to do is, in this, we know that distance is equal to speed into time. So what you will do? Just simply, and the train would have been 10 kilometers per hour faster. So if we'll just assume, let the speed of the train be x kilometer per hour, and time taken will be y hour. So what will be our distance? Distance will be xy. Now, the first, what is our first case? If the train would have been 10 kilometers per hour faster, so what we will do in first case? First case, x plus 10, and it would have taken 2 hours less. So time is our y hours, so it will be y minus 2. This is very important. This is equal to x1. And our second case, what does it say? If the train was slower by 10 kilometers per hour, अब ट्रेन क्या हो गई? स्लो हो गई, और टाइम क्या हो गया? बढ़ गया. टाइम हो गया 3 आवर्स मोर, y प्लस 3 हो गया. तो ये बराबर xy आ गया. अब यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन गई है, और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये इक्वेशन क्या हो गई? xy minus 2x plus 10y minus 20 is equal to xy. If we solve this, what do